So hello guys, welcome back to the channel approximately after I guess 2 weeks or maybe 3 weeks. I'm really sorry for not posting any video for this long time because I promised you guys to stay consistent, but there was a change in a plan, in my plan basically, that I wanted to go abroad. Yeah, I still want to, but due to some family reasons I am not going to abroad just now. I can plan it when I have to go for post graduation. But right now I am not going to abroad. I am staying here in India for my graduation. So I also have not given the exam of IELTS, that is International English Language Testing System. I was gonna give that exam too, as I have fully prepared for that exam, and I was regularly scoring like 35 out of reading and 36, 37 into listening, and writing I was on 7 bands, sometimes 6.5 bands. But my speaking was pretty good at that time. It was about of 7.5 and 8 bands in between that scale range. But due to some reasons, I was not able to continue that, and I am currently thinking of taking admission in a nearby university that is currently in my hometown. So, but there's not any specific reason for that. This is just an assumption, you can say. This is not sure right now that where I'll be taking admission in India. But yes, I assure you guys that I will be regularly posting my IELTS videos, as I have learned a lot from all the 4 modules, and I've also learned many life learning skills that this IELTS has taught me, and I would surely love to share that information with you guys. Even though I am not doing IELTS, but I had prepared for it, so I have currently appropriate knowledge to guide you guys and tell you a lot more about the IELTS exam and how to give that. Basically, not to give that exam, as I have personally not been into an exam center yet, a professional exam center, but I have been to some of the coaching institutes, and I know how they teach other students and how they cope up with the study material and all that. I would also provide you all the links related to these all 4 modules like reading, listening, speaking and writing simultaneously in the upcoming videos. And yes, I am sorry again for not being consistent, but surely I'll be on track very soon, and I'll be posting this video today, that is on Sunday of 24th December. I guess today is 24th December. Let me check. Yeah, it's Sunday 24th December, and I'll be posting it with this video today evening after all the editing process. And this video will be totally focused on the speaking module of IELTS, and I'll tell you guys that how to make cue cards, how to make key points, what to speak in your cue card, how to speak, how to look natural. All these points will be covered. Your speaking should not sound like something that you have crammed that thing. It should be like that you are a native speaker of that language. You should be so appropriately saying all those words, and you should not use those heavy words to give a proper explanation to the examiner. Instead of that, you should use some of the basic words, not too basic, that is like good, bad, not like that, but some of the mediocre words, we can say that give a good impression to the examiner, but not that hectic, heavy words. I think so you guys are getting my point, what I'm going to try to say. And. So let's start it without any further breaks. I know it's been a long time. Maybe some of you 10 to 14 subscribers, whatever I have, maybe 1 or 2 of them missed my videos. But yes, I'll be surely consistent from today onwards, and I'll be regularly posting 1 video daily of this and 2 shorts daily. This is my promise to you guys. 2 videos in the form of shorts, that is of minimum 15 to 60 seconds, and after that a single video of 1 module. I think that most of the individuals are good in listening. They can easily do listening, as this doesn't involve a lot of hard work. And as I say, reading
some of the individuals need guidance for that too. But for speaking, basically most of the individuals need help, as they are not able to get the exact amount of appreciation when they speak. Yes, this may sound somewhere illogical, but yes, it is logical. Because some of the speakers, some of the students even try to speak in English, speak the cue card or the discussion or the introduction part, but they are not encouraged by their teachers. If they are going to a coaching, they are not given appropriate marks according to that. You know, all the IELTS centers and all that only takes money. I'm being brutally honest. They take money, they give you an appropriate band score and just that. But I am not saying that they are bad, but it is how business works like. And I think I'm getting off the topic and off the track, so I will not drag that part here. I will start telling you guys that how to prepare for a cue card. I have a list of 70-80 cue cards that are regularly asked, and this is the updated version of September to December. And as soon as I get the new list, I'll surely share it with you guys too. I'll make a PDF and attach a Google Drive link with it, this video. And so without wasting any more time, let's start this video and the speaking module. So I would need a copy for that to make keywords. Yes, here it is. लाइट आ भी गई, होपफुली, थैंकफुली. तो पहले हमने क्या करना, फॉर एग्जांपल पहले होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट. इंट्रोडक्टरी पार्ट में वो आपको जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2-3 मिनट का. इतना ही जाता है इंट्रोडक्टरी पार्ट. इफ यू आर गिविंग गुड आंसर्स, इतना ही पूछेगा आपसे, मतलब 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन, जस्ट दैट. एंड अगर आपने मतलब आंसर आप दे ही नहीं पा रहे, तो वो आपसे ज्यादा कुछ नहीं करेगा. लाइक वो मतलब जैसे आप कुछ भी इरेलेवेंट आंसर दे रहे हो उसको, तो वो आपको पूछेगा व्हाई, व्हाट. तो आपने फंसना नहीं है. इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट राइट आंसर, उससे थोड़ा सा रेलेवेंट बोल दो. अगर आपको एग्जैक्ट सेम नहीं आता, उसको थोड़ा रेलेवेंट बोल दो, बट डोंट गो ऑफ टॉपिक. उसके बैंड डिडक्शन भी होती है. सो इंट्रोडक्टरी इतना होता है, लाइक इंट्रोडक्टरी 2-3 मिनट के जाते हैं क्वेश्चन. उसके बाद आता है क्यू कार्ड. क्यू कार्ड आपका जाता है 2 मिनट का. स्पीकिंग टाइम होता है, वो आपको कभी भी स्टॉप करवा सकता है. एंड 2 मिनट के बाद भी आपको बोलते रहना है until and unless the examiner says to stop it. एंड देन मूव हो गए डिस्कशन पार्ट में. 2-3 मिनट इंट्रोडक्शन पे लगे, 2 मिनट क्यू कार्ड पे लगे, 5-6 मिनट हो गए. देन अब हमने आना डिस्कशन पार्ट में. दिस इज द लेंथी पार्ट. दिस कैन गो अप टू 6-7 इट वुड टेक अप टू मतलब 9-10 मिनट्स. यस, तो आपकी ओवरऑल स्पीकिंग 15 से 16-20 मिनट की होती है. तो डिस्कशन पार्ट सबसे लंबा होता है. तो इसमें यू हैव टू गिव इलैबोरेशन. लाइक इंट्रोडक्शन में यू हैव टू फिनिश द आंसर्स इन 2-3 लाइन्स, जस्ट दैट. बट इन डिस्कशन पार्ट यू हैव टू गिव आंसर्स लाइक 5 लाइन्स के आंसर्स देने पड़ेंगे आपको. 4 to 5 लाइन्स के मिनिमम आंसर्स देने पड़ेंगे, इससे ज्यादा भी, टू गिव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. डिस्कशन ये क्या ही होता है, ये थोड़ा था कि एक लाइन बोल रहे. डिस्कशन में यू हैव टू इलैबोरेट इट. सो 5 to 6 लाइन्स के आंसर्स देने होते हैं. अब ये थ्योरेटिकल पार्ट तो मैंने आपको समझा दिया, मैं उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल पहले हम क्या बनाए, इंट्रोडक्शन बनाए और क्या क्यू कार्ड बनाए. लेट मी थिंक. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं पेज 221 पे. यस, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस. काफी टॉपिक्स होते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के ना. लाइक किसी भी चीज को हो सकता है, लाइक होम टाउन, वर्क और स्टडी, अकोमोडेशन, होम, ट्रांसपोर्ट, लैंग्वेज, आइसक्रीम, रोबोट्स, फिशिंग, मैप्स, क्लोथिंग, नॉइज, टी एंड कॉफी, लाइक एनीथिंग. इन सब पे हो सकते हैं. साइंस, कलर्स, स्काई एंड स्टार्स, कुछ भी. तो आगे हम चलते हैं. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो कुछ ना सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हर स्टूडेंट को पूछे जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से भी पहले, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से पहले.
पहले होते हैं मतलब कुछ क्वेश्चंस लाइक हमारी इंट्रोडक्शन, जो मेरी इंट्रोडक्शन है, मैं जाऊंगा तो एग्जामिनर मेरे से कुछ हर एक से पूछेगा, वो वाले क्वेश्चन होते हैं लाइक किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं व्हाट्स योर नेम वगैरह, वैसे क्वेश्चंस। देन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू एनी टॉपिक्स, देन क्यू कार्ड, देन डिस्कशन पार्ट। ये सिस्टम होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं लाइक प्रॉब्ली आस्क किए जाते हैं लाइक मे आई नो योर फुल नेम। इनकी कोई बैन रिडक्शन नहीं होती जो हमारे लिए पूछे जाते हैं, हमारे मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मेरे से पूछा है व्हाट्स योर नेम, आई वुड से यू मे एड्रेस मी बाय माय नेम वैभव ओबेरॉय और माय फर्स्ट नेम वैभव, ऐसे। इसके कोई बैन रिडक्शन नहीं होती है इनके, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल किसने पूछा, एग्जामिनर ने पूछा मे आई नो योर फुल नेम, तो यू हैव टू से माय नेम इज वैभव ओबेरॉय और व्हाट्स योर नेम, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट माई सेल्फ वैभव ओबेरॉय, ऐसे करके कर सकते हैं, जस्ट दैट। उसके बाद आगे से पूछिएगा हाउ मे आई एड्रेस यू। एड्रेस में क्या होता है, हाउ मे आई एड्रेस यू, आप ये बोल सकते हो यू मे एड्रेस मी बाय माई फर्स्ट नेम वैभव और वॉट एवर योर नेम इज, राइट। आपने यही बोला यू मे एड्रेस मी बाय माई फर्स्ट नेम वैभव, राइट। और someone can, examiner can also say that how may I call you or address you, so that's both the same. तो you can also say your nickname too, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब there's not an issue। उसके बाद आएगा वो पूछेगा may I see your ID, ये डेफिनेटली पूछेगा any examiner। what is your ID, your passport is your ID, right। तो अगर वो पूछेगा मे आई सी योर आईडी, तो यू हैव टू गिव आंसर्स लाइक हियर इज माय पासपोर्ट, यू हैव टू शो द फर्स्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट टू द एग्जामिनर। यू डोंट नीड टू से yes फॉर दिस आंसर, राइट, दिस क्वेश्चन, राइट। You just have to open the first page of your passport and show it to the examiner, right? And where do you come from? For example, I am from Amritsar, so a basic short line, I come from Amritsar. It's a small town located between this and this जगह, this and this place, right? For example, अगर हमने बोलना हो I come from फगवाड़ा, let us suppose a name, तो बोल देना it is a small town between Jalandhar and Ludhiana। फगवाड़ा is a small town between Jalandhar and Ludhiana। तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया आपको, जो आपका होम टाउन होगा उसके रेलेवेंट कुछ भी होगा आप बोल सकते हो, बस इतना। इसकी कोई बैड रिडक्शन नहीं है इन क्वेश्चंस की। उसके बाद आएगा यस, इसके बाद आएगा ये भी पूछ सकते हैं आपसे, हाँ, वर्क और स्टडीज, दैट वर्ड वेदर यू वर्क और यू स्टडी, ऐसे पूछ सकते हैं। जो जैसे एकेडमिक ट्रेनिंग, एकेडमिक स्टूडेंट से तो नहीं पूछते, बट जो जनरल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आइल्स दो तरह की होती है, एक एकेडमिक एंड एक जनरल। एकेडमिक्स वो होती है आइल्स, एकेडमिक आइल्स जो हम करते हैं स्टूडेंट्स टू गेट अ स्टडी वीजा, राइट। एंड जनरल ट्रेनिंग वो करते हैं दोज हु वांट टू वर्क देयर, गो एंड वर्क देयर ऑन वर्क परमिट। तो मैं अभी आपको एकेडमिक के बारे में ही बताऊंगा इस चैनल पे पूरा। तो हाँ, आपने जैसे अगर कोई जनरल ट्रेनिंग वाला है, मतलब बता रहा हूँ ये तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जनरल ट्रेनिंग वाला है या नॉर्मल भी है, तो उससे पूछा जा सकता है व्हाट वर्क डू यू डू, तो यू हैव टू टेल व्हाट वर्क डू यू डू, लाइक आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वर्क एज अ पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर, और आई वर्क एज अ फ्रीलांसर, आई वर्क इन अ कंपनी, आई वर्क देयर, आई डू दिस। तो आपको बताना है, ये पर्सनल आंसर होते हैं, इसमें कुछ ऐसा गाइड करने वाला नहीं होता है, यू हैव टू गिव ऑन द स्पॉट, इसमें कुछ लर्निंग प्रोसेस नहीं है इसका, जस्ट बी नेचुरल देयर, इट शुड नॉट लुक लाइक यू हैव क्रैम्ड दीज आंसर्स, राइट। व्हाई डिड यू चूज टू डू दैट टाइप ऑफ वर्क, ये आपसे पूछेगा आपने क्यों चुना है इस काम को, मतलब इस तरह के काम को करने के लिए, और दैट जॉब। तो यू हैव टू आंसर लाइक आई चोज दैट वर्क बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन इट, लाइक उसे लगना चाहिए कि यस you have proper knowledge about this field where you are working or where you have a job, you are proper interested in it, you put your efforts in it, उसे लगना चाहिए, like you have to satisfy the examiner, right? Is it very interesting? अगर आपसे वो पूछता है तो yes you have to answer it is very interesting, like you can disagree too,
बट देन वो आप पे डबल ट्रिपल क्वेश्चन हो जाएंगे कि वाई डू यू डिसएग्री विद दिस, इफ यू डोंट लाइक दिस जॉब वाई आर यू डूइंग इट, डोंट यू थिंक दैट इन इफ यू डोंट लाइक दिस जॉब यू शुड क्विट दिस, यू शुड डू दैट। वो आगे तक मल्टीपल क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे आपके लिए। सो आंसर सोच समझ के लेना, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, टेक योर टाइम, बट इतना टाइम भी नहीं ले लेना कि एग्जामिनर कहे कि जाओ बाहर, बहुत आपका टाइम ओवर। सो अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डू यू मिस बीइंग अ स्टूडेंट, तो यू हैव टू गिव योर आंसर, राइट। इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बता सकते हो। येस आई मिस बीइंग अ स्टूडेंट, नो आई डू नॉट मिस बीइंग अ स्टूडेंट। नो कर रहे हो तो आपको देन भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, यस बोल रहे हो तो भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। कोई भी आंसर बोलो उसको जस्टिफाई जरूर कर दो कि एग्जामिनर आगे से आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करे ही ना, कर ले तो वो तो उसकी मर्जी पे है, बट आप उसको अपनी तरफ से पूरे एंड सेटिस्फाई करके भेजो। बताओ फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा डू यू मिस बीइंग अ स्टूडेंट, तो आई वुड आंसर लाइक यस आई मिस बीइंग अ स्टूडेंट, नाउ व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज दैट दे वर द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, राइट। You have to just lie or whatever I can say. I shouldn't say it, but yes, if you want to learn IELTS, I'm giving you a maximum tip that learn to lie. If you want to score good bands in IELTS, learn to lie. Thus, आपसे आगे पूछ सकता है कि what subjects are you studying? देन आप बता सकते हो कि आई जस्ट कम्प्लीटेड माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन इन कॉमर्स स्ट्रीम फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई विश टू गो अब्रॉड फॉर माई हायर एजुकेशन, राइट। आगे से पूछेगा आपसे व्हाई डिड यू चूज टू स्टडी दैट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट्स आपको बताना पड़ेगा क्यों चूज किया, क्योंकि इंटरेस्टेड थे, आप पसंद करते हो अपने सब्जेक्ट्स को। और मतलब अगर आपसे पूछता है कि डू यू प्रेफर टू स्टडी इन द मॉर्निंग्स और आफ्टरनून, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो कि आई स्टडी इन द मॉर्निंग्स बिकॉज एट दैट टाइम आई फील वेरी फ्रेश एंड आई कैन कंसंट्रेट ऑन माई स्टडीज, राइट। काफी तरह के आ सकते हैं, इसका कुछ ऐसा नहीं होता। आपसे लेते हैं, हाँ नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट जाते हैं। ये बेसिक से लाइक होम पे पूछ सकता है, डू यू लिव इन अ हाउस और फ्लैट, व्हाट काइंड ऑफ हाउसिंग अकोमोडेशन डू यू लिव इन। आपको रिप्लाई दे सकते हो आप, आई लिव इन अ हाउस, इट्स अ 2 स्टोरी ब्रिक हाउस। आगे आपसे पूछ सकते हैं कि हु डू यू लिव विद, आप बोल सकते हो कि आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर और सिबलिंग्स, वट एवर यू वॉन्ट टू आंसर। एंड इफ द एग्जामिनर आस्क्स प्लीज डिस्क्राइब इट अ लिटिल दैट योर हाउस ऑब्वियसली, तो you have to explain it like this. It is a 2 story brick house. There are 4 bedrooms attached with attached bathrooms, a kitchen, a living room and a drawing room. There's a small lawn in front and a kitchen garden in the backyard. So you have to elaborate that too if examiner asks, right? So ऐसे काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके बारे में, होम टाउन के बारे में पूछ सकता है आपसे, होम टाउन, व्हाट्स द नेम ऑफ योर होम टाउन। जैसे मैं अभी हमने पहले कवर किए थे ये सारे, आई एम फ्रॉम अमृतसर, इट्स अ स्मॉल टाउन लोकेटेड बिटवीन दिस एंड दिस। वैसे आप स्मॉल वर्ड ना यूज करो तो इट वुड बी बेटर, आई वुड लाइक टू से दैट। मैंने पहले भी मेंशन किया था एक जगह स्मॉल, बट स्मॉल वर्ड मत यूज करो, इट डजंट गिव्स अ गुड इंप्रेशन, राइट। It gives an impression like you have a bad thinking or an underprivileged thinking about your hometown. So don't use that word. My bad. I would not say it again. And examiner can ask, are there any tourist attractions in your hometown? So you have to answer yes, there are, or no. It depends upon you. But I would like to say that say yes, because if you have the right answer, then there's no use of saying no. Maybe that examiner has visited that place to your hometown, and if you said there are no attractions but he has visited many attractions, that could cross question. I am saying that lie, but lie effectively. Don't get caught while lying. Don't take it in wrong sense. It's just for educational purposes, right? Just know that. आगे आ सकता है,
आगे आ सकता है ट्रांसपोर्ट के बारे में, हाउ डू यू गो टू वर्क स्लैश स्कूल, तो you have to answer like something like this: I work in a city that is about 25 kilometers away from my hometown and I take the public bus to work. Also, there is a lot of traffic near my office and it's hard to find parking. There are some paid parking garages, but they are expensive and I don't prefer to park there. I park it near my friend's house or in his lawn. Something like that. You have to make a short story of 3-4 lines, right? 2-3 lines. इंट्रोडक्टरी में इतने इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, फिर वो सीधा मूव करेगा क्यू कार्ड पे आपके, इतना ही बस इतने पूछेगा. इफ यू आर इफेक्टिवली आंसरिंग देन भी वो बोल सकता है कि उसे इंटरेस्ट आ गया, उससे आपसे बात करनी है, तो वो आपसे ज्यादा पूछेगा क्वेश्चंस एग्जामिनर, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू ऑल दैट स्टफ. तो मैंने जहाँ से ट्रेनिंग ली थी, कोचिंग ली थी, I have been teaching there too and I got to know a lot more about these things. So आगे चलते हैं हम अपने ये फॉलो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होगी. हाँ, क्यू कार्ड पे आते हैं. आप पहला क्यू कार्ड पे आ जाओ. फर्स्ट क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब एन एक्साइटिंग एक्टिविटी यू एक्सपीरियंस्ड विद समवन एल्स. So you have to describe that exciting activity. How would you describe it? Answer me in comments about this. For example, if you are given a cue card by the examiner, describe an exciting activity that you experienced with someone else. Right? This is the cue card. I'm saying it again. Describe an exciting activity that you experienced with someone else. I'm sorry for that. एंड आपके क्यूज हैं, आपके पास 5 क्यूज हैं. वॉट द एक्टिविटी वॉज, हु यू वर विद, वेन एंड वेयर इट हैपेंड, व्हाई यू वेंट फॉर इट एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट. राइट, 5 क्यूज आ गए आपके पास. 5 क्यूज में से यू हैव गॉट 1 minute टू मेक नोट्स. ये बोलने का यू हैव 1 minute टू मेक नोट्स एंड 2 minutes टू स्पीक आफ्टर दैट. तो आपको ये टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना है अपना. तो 1 मिनट में यू डोंट जस्ट हैव टू राइट द आइडियाज कि इसके अंदर क्या क्या लिखना है, वो तो लिखना ही लिखना है. यू हैव टू ऑल्सो एड सम ऑफ द गुड वर्ड्स लाइक वोकैबुलरी इनहांस करनी है. इसमें थोड़े इंप्रेसिव वर्ड्स थोड़े से डालने हैं. लाइक एग्जाम में वो सिंपल ऐसको नहीं सुना कि सिंपल लाइन सुना दी, उसको मजा नहीं आएगा. फिर वो आपको उतने 6 बैंड ही देगा. अपने अगर आपने नॉर्मल सा बोल दिया, बस रुके नहीं हो तो बोल दिया 6 बैंड मिल जाएंगे, बस उसका कोई मजा नहीं है. इफ यू आर डूइंग इट, डू इट परफेक्टली और एल्स डोंट डू इट. मेरा मानना तो ये है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट भी करती है मेरा सोच बाकियों के साथ. दैट मेरा मानना ये, अगर इफ यू आर डूइंग अ वर्क, पूरा अपना हार्डवर्क लगाओ और करो. ये नहीं है कि थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा रहने देते हैं, उसका मजा नहीं आता. मेरा एक अपना लाइफ का ऐसा सिस्टम है, either zero or either hero. There's no in between. Either I'm not working on it, or if I'm working on the thing, I will do it surely. पूरी चीज जान लगा के. 1 बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, तीसरी बार मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा. Again, I'm getting off topic, but this is necessary to teach you guys something. Even from my learnings, right? This may be helpful for you guys too. So. क्यू कार्ड के 1 मिनट है तो हम क्यूज बना लेते हैं. What the activity was experienced. हाँ, मैंने इसके नोट्स बनाए होंगे. आई थिंक सो मैंने इसके नोट्स बनाए होंगे. लेट मी चेक. नहीं, ये मे बी हाँ, मिल गया. काफी सारे मिल गए. एक्साइटिंग एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी बताना है हमें. एक्टिविटी में कुछ भी हो सकता है.
कुछ स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं लाइक बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काई डाइविंग, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। और स्पोर्ट्स लाइक यू प्लेड क्रिकेट, फुटबॉल, समथिंग लाइक दैट। एक्टिविटी बताना, उन्होंने कुछ नहीं बताया क्या है। या तो बोला था ना स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है या स्पेसिफिक ट्रैवल है, कुछ नहीं बताया। यू कैन से एनीथिंग। तो ओह सॉरी मैं वीडियो बता भूल गया। I'm extremely sorry for that. I'm just looking. Yes, I found it. So, मैंने बनाया है exciting activity you experienced with someone else, right? तो इसका मैंने बनाया है फर्स्ट क्यू का what the activity was. Activity was skydiving, right? एक skydiving हो गया। skydiving के साथ सेकंड क्यू है who you were with. मैंने सेकंड में लिख दिया my bosom friend. Bosom friend is your best friend, or your fast friend, right? And third one is when and where it happened. As you can see, when and where it happened. So it was in Australia. When, where, on a flight. Done. शॉर्ट बनाना, बहुत लंबा नहीं लिखने चला जाना। आई नो मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, बट इस कंसेप्ट को डिटेल में समझाना जरूरी है। एंड वाई यू वेंट फॉर इट, वाई यू वेंट फॉर इट मैंने लिख दिया इट वॉज ऑन माई बकेट लिस्ट, टॉप ऑफ माई बकेट लिस्ट। इंप्रेसिव आ गया ये, बकेट लिस्ट में था कि हाँ मैं मतलब बकेट लिस्ट, if most of you guys may be knowing that bucket list is something that you want to do in your life but in the upcoming future, but you are not able to do that right now. So in your wish list you can say that on top of your wish list, on bucket list, bucket list seems a good word. तो why you went for it, एक तो ये था। then उसके बाद सेकंड में आ सकते हैं कि my friend was feared of heights, so to relieve that fear I insisted him. Firstly he was not going, but then somehow I managed, I convinced his parents and all that stuff. You have to add up all this stuff in these 2 minutes. It should be impressive. If this is impressive, the examiner would be more interested to ask you questions in the discussion part, as he or she has enjoyed your speaking, enjoyed your cue card fully, and the examiner is curious to get a lot more information about what do you do or what other kinds of knowledge you have. Are you a perfect person to give a good band score, right? And why you went for it बताते हैं, एक तो fear था, एक top of bucket list में था, and इसके बाद थोड़ा अटैच करना है कि इसके साथ कैमरास भी अटैच किए गए थे हमारे साथ to record that experience. अटैच्ड कैमरास थे कि हम अपने फ्यूचर में मेमोरीज की तरह इसको रख सकते हैं। एंड बहुत ही हमने 3 तो बता दिए, they are enough, more than enough. And explain how you felt about it. लास्ट में ये बताना how you felt में बताना है हमने कि अपने एक्सप्रेशंस to use idioms in it, right? हमारे गुड वर्ड्स हो गए, हमारी कोहेरेंस हो गई, लाइक सेंटेंस बाय सेंटेंस। पहले स्काई डाइविंग हो गया एक्टिविटी, देन बॉसम फ्रेंड, देन कहाँ पे था और क्या कहते हैं, क्या क्यों किया आपने ये चीज, मतलब ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है। कोहेरेंस हो गया, एक इडियम्स यूज कर लिए, वोकैब यूज कर ली, प्रोनाउंसिएशन ठीक हो गई, लेक्सिकल रिसोर्सेज ठीक है, तो बस और क्या चाहिए उसको, टास्क रिस्पॉन्स मिल गया, उसको कोहेरेंस मिल गई, लेक्सिकल रिसोर्सेज मिल गया, प्रोनाउंसिएशन मिल गई, और क्या चाहिए भाई, परफेक्ट है। And sorry for the expressions I gave. Basically, I'm just a bit puzzled right now as I need to drink water, but वहाँ पे वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी मुझे। I am being brutally honest with you guys right now. So explain how you felt about it. हाँ, हम felt क्या किया, अगर आपने अच्छा फील किया, इसमें अच्छा ही करोगे, ऑब्वियसली अगर गए हो मोस्टली तो अच्छा ही करोगे, तो यू हैव टू यूज idioms like on the 7th heaven, over the moon, on top of the world, on top of the world, मतलब बहुत ज़्यादा excited, मतलब मज़ा आ गया ऐसा, like it was very fun, it was a fun experience. On top of the moon, no sorry, on top of the world, over the moon, on the 7th heaven, or as a cherry on the top of the cake, icing on the cake, somewhere like these idioms to express your happiness, your joy, right? So one more tip,
कि अपने जब भी स्पीकिंग देनी है उसमें थोड़ा ऐसे हाथों को ऐसे करके रखना है, ऐसे ऐसे करके रखना है जब भी नीचे, बिकॉज दिस इज द बेस्ट पोजिशन आपके हाथ हिलेंगे. यू डोंट हैव टू मूव हैंड्स लाइक दिस. वो आपको समझाने के लिए करो, बट एग्जामिनर के सामने यू हैव टू कीप योर हैंड्स लाइक दिस थिंग, लाइक ऐसे करके रखना उसको, ठीक है, राइट, ऐसे करके रखना. मतलब कि अगर आपने नीचे रखना है ऐसे करके, इसलिए ये आपके हाथ मूव ना करे, आपस में लॉक हो जाए ऐसे ऐसे, ठीक है. एंड मेंटेन अ गुड स्माइल in front of, not excessive smile, but yes, a pleasant smile, like just like normal smile. Okay, extra smile may portray a bad image of you, or may, that's a different topic. Let's just not discuss that here. And yes, I'm gonna speak the cue card approximately, I guess, after 20-25 days, so it may be a very bad experience. But yeah, it will be good within 4-5 days of getting back to the topic, right? So I am going to say, describe an activity that you experienced with someone else, right? So what the activity was, who you were with, when and where it happened, why you went for it, and explain how you felt about it. मैंने ऐसा बना दिया. तो स्टार्टिंग मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ. Well, there are a variety of activities that I have experienced in my life. Some of these activities were related to bungee jumping, skydiving, and river rafting. Some of these also includes playing football sports on some district levels or state levels. But today, I'm gonna talk about an activity that I experienced recently with my bosom friend. Or with my bosom friend, right? मैं यहाँ पे स्टॉप हो गया, मैं आपको बताने के लिए स्टॉप हुआ, बट क्यू कार्ड में स्टॉप नहीं होना. बॉसम फ्रेंड ऐसा ने बोल दिया, बट अपने ये नहीं बताना, आपने बताना व्हाट द एक्टिविटी वाज. पहला ये क्वेश्चन था, तो पहले ये बताना है. मैं आपको बताने के लिए वो स्टॉप हो, राइट. मैं स्टार्टिंग से करता हूँ, पूरा फ्लो में बोलता हूँ, राइट. Well, there are a variety of activities that I have experienced in my past life, and I have quite enjoyed them. Some of these activities included scuba diving, bungee jumping, river rafting, and some of the sports events like on state levels or national levels like hockey and football games. But today I'm gonna talk about an activity that I experienced recently. That activity is called skydiving. Basically, I have experienced this skydiving activity with my bosom friend, and he has been there with me for all ups and downs in my entire life at this time, and he has been with me through last 5 to 6 years. And he was basically scared of heights, and I insisted him to do this activity. At first, he was very scared to do this skydiving, but somehow I convinced him and asked his parents, can I take him out for skydiving? And that skydiving was not near to my country, that was in Australia. So we had to go out to Australia buying a flight ticket. We just somehow managed and got into the flight, and that was the first ever experience of our flight. We really enjoyed that flight, had good food, and just after reaching Australia, we went to the place where skydiving was held. We went to the place in a cab, and after that, just reaching that place, we started exploring here each other. That this place is very nice. This has very good ambience, and we could not wait to jump off from the sky with parachutes. And obviously, 2 persons that were accompanying us. That would be a memorable experience, I was very sure, and that totally was. As soon as we got up into the plane and were ready for skydiving, the jumper said that don't worry, everything will be fine, and they are attaching cameras to us. That was cherry on the top of the cake, as our activity was going to be recorded all the time, and our face expressions, we could show that to our parents too, and that was the best part. We just jumped from the plane with the 2 carry-ons that were accompanying us, 2 carry-on passengers, and by jumping down, that was a very scary, quite impressive moment for both of us, as we were not expecting it to be that much joyful. We were on the top of the world at that time, flying in the sky, seeing everyone beneath us. They were like small molecules for us. So I somehow
managed to jump, and after landing we were both very mesmerized by that total experience, and we were on seventh heaven, as that was it was a full blast of entertainment. Plus my friend which was scared of heights was now relieved and could now jump off from a building too. So this was the activity I experienced with my bosom friend, and I would definitely like to experience some of the activities like this in the upcoming future. सो ये था मेरा क्यू कार्ड, जैसे मैंने बोला इसमें मैंने काफ़ी मिस्टेक्स की, इसमें मैंने 2 बार बेसिकली यूज़ किया, एंड भी 2 बार यूज़ किया, मतलब लाइक मैंने स्टोरी तो बता दी, आई थिंक सो थोड़ा सा टाइम 15 सेकंड ऊपर भी होगा 2 मिनट से मे बी, बट मैंने कवर कर लिया था सारे टॉपिक्स। तो अगर एग्जामिनर स्टॉप भी कराए तो कोई दिक्कत नहीं होती कि आपने टॉपिक सारे कवर कर लिए ना। ये था सीन। इसमें मैंने गलतियां भी की काफी, क्योंकि इट हैज बीन लॉन्ग टाइम, लाइक 25 डेज सिंस नो स्पीकिंग। तो आई विल ग्रेजुअली इंप्रूव इट इन द 4-5 days and I'll be back to that 8 bands for speaking that I had, and I definitely know that I'll be able to do that 8 bands for speaking daily. So you have to make a story. उसके बाद your examiner will say let's move to the discussion part. आपको डिस्कशन पे लेके जाएगा, बोलेगा स्टॉप लेट्स मूव टू द डिस्कशन पार्ट। तो उसके आगे आपको डिस्कशन पे चलते हैं हम। फॉलो अप्स पेज 10। हाँ, लेट्स मूव टू द फॉलो अप, राइट। इसके फॉलो अप्स पूछ लेगा व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज डू यंग पीपल लाइक टू डू। वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा। अब यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। लाइक स्पोर्ट्स का तो बता दिया, लाइक अगर मैंने बोलना हो तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, लाइक यंग पीपल लाइक टू टेक पार्ट इन अ वैरायटी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग एंड सो ऑन। बिसाइड्स दैट दे डू लाइक टू प्ले कन्वेंशनल स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा। एंड मैंने फास्ट बोला, इसको थोड़ा सा स्लो बोलना है, मैं जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ ये सब चीज, राइट। इसके फॉलो अप्स हो गए। आपके क्वेश्चन में से आपका जो अपना आंसर है उसमें से अगला क्वेश्चन बना सकता है वो कि व्हाई ओनली दी स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, नॉट एनी अदर स्पोर्ट्स। देन यू हैव टू आंसर लाइक दैट they also love to play other sports, but every individual has different interests according to their knowledge and according to their efficiency. So some of these individuals prefer to play these sports, others prefer to play different sports that you mentioned just now, right? ऐसे उसको आंसर्स को ब्रीफली उसको आंसर करना है। उसके बाद आगे से पूछ सकता है आपको why do some young people like adventurous activities। एडवेंचरस एक्टिविटीज में आप क्या बोलोगे इसका आंसर? मुझे एक मैंने आपसे पूछा था ना, कमेंट्स में मेरे को बताओ, या फिर क्यू कार्ड का क्या आइडिया बनाओगे थोड़ा सा, और एक ये बताओ मेरे को कमेंट्स में व्हाई डू यंग पीपल लाइक एडवेंचरस एक्टिविटीज। इसका आंसर बताना मेरे को। द मेन रीजन इज ऑफ कोर्स दैट द थ्रिल दीज गेम्स इंटेल। The risk involved makes these games much more exciting. These sports give a different kind of rush that is impossible to achieve in other sports. Moreover, these sports also help to push our mental and physical boundaries and overcome our deepest fears. Right? आपको ऐसे ऐसे करके आंसर बोलने हैं जी। उसके बाद do you think old people accept changes? अब इसका आंसर आपको नो में ही करना पड़ेगा। Yes कर सकते हो, but you have to justify that very strongly. Because we all know that old people do not accept changes too early, or they even don't like to accept or hear about anything changing, right? For example, if there's a flower pot that has been too old and that needs to be replaced from the house, but if the old individuals have some kind of attachment with that, or even they do not have attachment with that, they would definitely say that don't pick this thing from that place. It has a significance or whatever. Even if it doesn't have a significance, they will still say, leave it there. It's their habit. But yeah, it's good. Again, getting off topic, but yes, you have to say that most elderly people don't like to change because I think it becomes difficult to adapt changes as people grow older. In their youth, they have a sharp memory and flexibility which allows them to quickly learn new things and technologies. However, it becomes much harder to do so in later stages of life. Like, how do exciting activities relieve people's stress?
I think these activities make people forget about their worries and thoughts and bring them back to the present. And ultimately, when they put their lives at risk, they feel that their other worries and stresses are much more insignificant in comparison. Then, यहाँ पे आगे से पूछ सकता है आपसे, can you give some other examples of adventures or risky activities? So then you have to answer like this. There are many adventurous activities that people like: skiing, mountain climbing, dirt biking, sorbing, and so on. In a way, any activities which put our life at risk are adventurous in my opinion. So you can answer like this. And at last करते हैं discussion वन. इसको खत्म करते हैं. Last question: What skills do people need to take part in adventurous activities? अब skills की बात हो रही है कि adventurous activities में part लेने के लिए कैसी skills चाहिए होती है individuals में. तो आपको ये बताना पड़ेगा. आई थिंक देयर आर ओनली 2 skills required to take part in adventurous activities: a strong willpower and a physical fitness. Physical fitness is a given, but a part of these games is also overcoming our fears. No, physical fitness is a given, but a part of these games is also overcoming our fears, and that is only possible through mental fortitude, right? Or attitude. You can say both. So in this way, all your examination will be held, speaking module will be held. So be prepared for that too, right? I hope so this video has been beneficial for you guys in some way. So please, if you have liked the video, if you want to watch more videos or get more knowledge, do let me know in comments. Subscribe to my channel if you are a new one here, and share my channel to your family or friends who are planning to visit abroad or just want to get the knowledge about English language, IELTS. I'll surely be very happy. Share my channel to your family, to your friends, to even your parents, as this channel contains a lot more information that every individual needs, in my suggestion, in my opinion. And yes, if you are sharing this, do tell them to subscribe to my channel too, as I regularly do a lot of hard work to make content for you guys. So this much pyar to I deserve from you guys, right? Only asking for this amount of love. Subscribe to my channel, like to my videos, comments if you have any queries or any appreciation, share, because to reach more audience, to be able to benefit more people, right? This all is I am asking for. So thank you guys. Let's end this video here. We will meet tomorrow again with a new video, new module. तब तक के लिए good night.